day 2, we discussed deeply about art of story writing and how to perform under pressure of TAT. And now it is our day 3 and we will be discussing about word association test and situation reaction test. So starting with word association test. So as you know, word association test is the second psychological task. It is a psychological test, so it happens it happens just after the TAT is there. So after TAT, your hands will be a little fatigued. You will be mentally very tired. So when this particular test, WAT will be starting, so the conditions will be a little harsh and hard for you. So that it makes this test really important for bringing out subconscious responses from your mind. First, let us talk about what this test is. So WAT stands for Word Association Test, where you have to associate the word with the meaning and the whichever cognitive memory you have. You have to associate word and give it some meaning, and you have to write a complete sentence of that verb on that word. Okay. So what happens is that words will be projected in front of you on the screen, and every word will be projected on for 15 seconds, and there will be 60 words projected for 15 seconds, and it will take 15 minutes to this complete test will take only 15 minutes. There will be 60 words. Every word will be projected in front of you for 15 seconds. And as the word is projected, you have to write it. You have to write the sentence simultaneously while the word is being projected. It is not like the earlier tests, जहाँ पर आपको पिक्चर देखने के बाद स्टोरी लिखना स्टार्ट करना होता था. इसमें आपके सामने सिर्फ एक वर्ड आएगा जैसे मदर. 15 सेकंड्स तक के लिए वो वर्ड रहेगा और उसी के दौरान आपको उस वर्ड को पढ़ना है, सोचना है और सेंटेंस लिखना है. फिर 15 सेकंड बाद में डज नॉट मैटर आपने लिखा है नहीं लिखा, 15 सेकंड बाद में वर्ड चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड आएगा लाइक बेबी. फिर आपको सेंटेंस लिखना है और फिर वो 15 सेकंड के बाद में अपने आप वर्ड्स चेंज होते रहेंगे स्क्रीन पे, और कभी भी स्क्रीन ब्लैंक नहीं होगी. हरदम स्क्रीन पर वर्ड्स रहने वाले हैं. 15 seconds में वर्ड बदलते रहेंगे. There will be 60 words and it is a test which occurs in 15 minutes. So this is about basics about the test. डोजियर क्या होता है मैं आपको शो कर सकता हूँ if you want. अदरवाइज आप सबने देखा होगा साइकोलॉजी का डोजियर होता है जिसमें ये ये 20 सेंटेंसेस लिखने हैं. 20 वर्ड खत्म हो जाएंगे तो स्क्रीन पे एक ब्लैंक स्लाइड आएगी थोड़ी से टाइम के लिए, जिससे आप अपना पेज टर्न कर सकते. ठीक है. तो फिर ब्लैंक स्लाइड के बाद में वापस 20 वर्ड्स आपके सामने बैक टू बैक प्रोजेक्ट किए जाएंगे. यू हैव टू राइट 20 सेंटेंसेस, देन अनदर ब्लैंक स्लाइड विल बी देयर फॉर सम मोमेंट so that you can turn the page again. So there will be like 3 pages including space for 20 sentences to be written on those 3 pages. So this is about basic what is WAT test and what is word association test. Is anyone having any simple doubt about that how this task is conducted? Anyone? Great. Okay. I'm repeating the instructions and basic notes which I have made. In this test, the candidates are shown 60 words one after the other and are expected to make a short sentence using the word shown. The uses of the word can be in any form. For example, the word agree can be used as agreeable, agreed, agreement. ठीक है. आप वर्ड को इस फॉर्म्स में यूज कर सकते हो, etc. Each word will appear for 15 seconds in which you have to see the word and write a sentence. There will be a buzzer to indicate that the word has changed. No, actually it was not the case with my SSB. If it is
case with your SSB, then please inform me in the chat section. It is important to attempt at least 60 words out of 60 words. Do not avoid negative words. Since there is a severe time constraint, you will be unable to mask the responses, and your natural self will invariably come out. Hence, it is important to practice. Okay? So, I mentioned one sentence that it is important to attempt at least 60 words out of 60 words. Okay? So, you have to attempt all the words which will be shown to you. So, for that, you are going to face many challenges, and many challenges while practicing will also be coming. Challenges about how to handle our mind when it goes blank sometimes, how to write sentences in 15 seconds, how to write good sentences, what are good sentences, what are the matrices which decide that a sentence is good or bad. Okay, so we are going to discuss that all. Before starting on the session further on, if you please raise your hands, those who have joined this strategy program for the first time. How many? Okay. So let me tell you a bit about this program. Let me first tell you about Mavericks Group. That Mavericks is a Telegram group where we provide candidates a platform where they can practice PPDT, GD, Lecturate, and GP. So we regularly host practice sessions there. And yes, I have not screen shared anything, so don't worry about the screen. I can just turn on my camera if you want to have more interactive session. So Mavericks is a Telegram group where we practice GD, GP, PPDT, and Lecturate on weekly basis. We have a schedule, and we also time to time basis host strategy sessions. Like earlier we had some strategy sessions hosted, and these strategy sessions are hosted by recommended candidates. Now that I am also a recommended candidate, so I am also trying to help and contribute some part from my side, so that whatever little I have through the process, so that I can share and I can also learn further by sharing this. So yeah, so let us now proceed. I guess that's enough about the introduction. Do you have any other doubts, anyone? No? Okay, great. So let us proceed. So this is a test which was created to assess the subconscious mind of candidates. Okay, it involves a word interpretation technique where a word is shown and we have to associate that word with particular meaning, and we have to give it some meaning using our mind. We have to write the sentence. Test takers are shown the word in abstract essence. Consistency is the essential aspect of personality assessment. Whether you are projecting good qualities in TAT, are you projecting those good qualities also in WAT? Are you being consistent with your performance? That is the qualitative performance, not quantitative. That you are completing your stories, you are completing your sentences, you are giving good amount of SRT response. It is not the performance. What do I mean by performance is the quality of responses. So consistency is the essential aspect of personality assessment. There are three different confirmatory tests. Like the first test, which was TAT, was a main test. As we have also discussed it earlier, that 60 or 70% of the weightage to psych assessment is given to TAT. And this remaining tests, like WAT, SRT, and SD, these are confirmatory tests where we have first pointed out some qualities of the candidates and some negatives also, and that we confirm using the further task or further test. Okay, so let us now discuss about WAT. So there are many challenges. We are going to talk about one by one with each challenges, and we are going to discuss problem and solution, so that we will become more focused and more attentive while listening and discussing these problems. And please, it is my humble request that whatever
SSBs in the past experience. So if you have any point to add, please do it in chat section so that everyone will get benefit from your point or from your learning. So let's now begin with the first thing. That the first big problem in front of us is 15 seconds, and that we have to see a word, associate it, and write a sentence in 15 seconds. So I would say that you are focusing on a wrong problem. Actually, time constraint comes after. First, we have to think and understand that what is more important than time constraint. It is like saying in command task, GTOs usually make some candidate took out reverse in a reverse order ताकि जो कैंडिडेट वहाँ पर टास्क कर रहा है उस पर प्रेशर बढ़े. सो सेम टाइम कंस्ट्रेंट यहाँ पर सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए तीन चीजें आपकी जो स्टिमुलस के लिए आप जो रिस्पॉन्सेज दे रहे हो. So let us first discuss what are good responses and what are bad responses while writing WAT sentences. So सबसे पहले unacceptable responses की हम बात करते हैं. तो सबसे पहले नेगेटिव ओपिनियन. नेगेटिव ओपिनियन अबाउट एनीथिंग. अगर आपके सामने सिर्फ एक वर्ड आया है और उसके बारे में भी आप एक नेगेटिव ओपिनियन रख रहे हो और सेंटेंस में बता रहे हो, दैट सेज समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी. Negative opinions can be blaming an individual or group. आपका एक pre-confirmation bias होना किसी individual के प्रति या फिर किसी group के प्रति. Like for say कि if you are saying all sportsmen are if you are like criticizing politicians that all politicians are corrupt, so that shows that you are a person who generalizes things and who judges really well. So this is a thing which is to be avoided. Other thing like prejudice and biased responses, it can be like showing prejudice or any is towards any religion, towards not remembering the fact, towards casteism or any other ism that is there about gender and other stuff, and showing negative attitude towards other. अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है हर चीज को लेकर, अगर आपके सामने एक वर्ड आया है, आप न्यूट्रल वर्ड आया है उसके ऊपर भी नेगेटिव सेंटेंस लिखते हो, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ वर्ड लाइक, अगर उसका सेंटेंस है नो वन लाइक्स दैट पीपल, सो दैट्स अ नेगेटिव सेंटेंस. आप इसमें जज कर रहे हो और आपके पास एक बायस है जो तो क्या आप सोचते हो कि आपके सेंटेंस लिखने से साइकोलॉजिस्ट मान जाएगा कि अगर आप लिख रहे हो आई एम कॉन्फिडेंट करेजियस पर्सन तो आप करेजियस हो? नो, एक्चुअली यू आर blabbering there, you're not doing the work. तो अगर आपको वर्क करना है तो अगर हम आगे बात कर रहे हैं कौन से सेंटेंसेस आप रेफर कर सकते हो, कौन से सेंटेंस लिखने चाहिए. There are also some sentences which are suggestion based, जहाँ पर आप ज्ञान दे रहे हो, आप प्रीच कर रहे हो, आप दूसरों को बता रहे हो ऐसा होना चाहिए या फिर दुनिया ऐसी चलनी चाहिए. अगर आप चाहते रहोगे और सोचते रहोगे और दुनिया सोचोगे कि दुनिया बदल जाए, तो it's not going to happen. As in the case of like there is a quote of Mahatma Gandhi also that if you wish to see any change in the world, be the change first. तो आपको वो चेंज पहले होना होगा और you have to take actions first for that. Like some examples for suggestion based sentences which you must avoid. There is a word mistake, और उस पे एक सेंटेंस आपने बनाया कि one should accept his mistakes. So the problem with this sentence is it is completely fine advice that yeah, one should accept his mistake, but currently you are a student, you yourself are learning, so you are not supposed to preach, you are supposed to follow. Student does what? Student learns and student executes. Okay, so in this point of time you are an aspirant, so it is supposed that you have to follow things and you have to do stuff, not preach. So you do not have to use these words like should, which is a very preachy word. You can use must as a responsibility, because when you are writing like one must throw the garbage
not a suggestion or advice. Rather, it is a necessary responsibility which everyone must follow. So you can use must rather than using should or preachy verbs. For example, the word cheat. Do not cheat. So this is also an advice. So let us now talk about which sentences are right sentences and what sentences are good sentences. So first I am going to tell you that what sentences are considered as good sentences as per the psychologist. Before that, let us take doubts if there are any in the chat section. Also in WAT, should we write quotes like, for example, for hate, love all hate, none is this. Love all hate, none is this acceptable? No, I guess Aditya, I'm not able to understand your question. Anyone else having any other doubt, then raise your hand and ask about negative. Yes. We are going to come upon that how to formulate sentences on negative words and how to formulate sentences in time constraint. First, our subtopic for the discussion right now is what are good sentences and what are bad sentences. We already have discussed it earlier. Okay? तो अब हम बात कर रहे हैं कि अच्छे सेंटेंसेस क्या होते हैं. तो प्लीज आस्क रिलेवेंट डाउट. और हाँ, अगर हमें जैसे आदित्य ने पूछा कि क्या हम क्योट्स लिख सकते हैं WAT में, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप क्योट्स ना लिखें, क्योंकि ये WAT एक क्रिएटिव टेस्ट है जहां पर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो और उसको टेस्ट किया जाना है. आपकी मेमोरी का टेस्ट नहीं है कि आपने APJ अब्दुल कलाम के क्योट्स सारे याद हैं या नहीं, या फिर आपको सारे कोड्स याद हैं या नहीं. No, it is a test of your creativity. It's a test of your creation abilities in your subconscious mind and what it creates. That's why I suggest you to create sentences rather than copying and pasting. Yes. Okay, so I'm now going to narrate the names. Yes, Harsh, you may unmute yourself and ask. And please also turn on your camera so that I feel that there are real humans in front of me. Yes, Harsh, you may unmute yourself and ask. I guess he's not unmuted. Yes, Suji. Am I audible, Sachin? Yes, you are. So today I was practicing WAT. I got two words. One is broader. So there I wrote that one should look at broader aspects of life. Another one is helpful. So there I wrote that helpful nature always pays dividend. Am I preaching here? Is my sentence acceptable? Wait. Could you repeat the sentence? The second sentence? Yeah, helpful. The second sentence was helpful. And there I wrote helpful nature always pays dividends. So was my sentence was right or acceptable? Okay, pays dividend. So the first word was broader, and you wrote a sentence that one must look at life from a broader perspective. तो ये आप बताना चाहते हो कि हर किसी को जिंदगी में बड़े नजरिए से देखना चाहिए, मतलब इट्स अ मस्ट. ओके, सो अगर हम जनरली इस बात को देखें तो ये कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं है जहां हमें मस्ट कहना चाहिए. It's not a law, it's not a moral obligation. It is just a way of life. Anyone can choose their way, right? Do you agree? Yes, I do. So if you are agree with this point, then how can you say that one must do in this particular manner only? No. Please, Sachin, I wrote that one should look at broader aspects of life. Okay. So should is a preachy word, and preachy verb. You know that this is a preachy sentence. Preaching. Yes. Let's come on to the second word. That is helpful. Helpful nature pays dividend. You are trying to, yes. So this is an observation that you have observed after doing some helpful work. That you have observed that whenever I had performed any helpful activities in the past of my relationship, it had always paid me dividend in some
just showing that you have observed something positive by doing some positive activity. Just like a lot of positive things. Yeah. So, Sachin, I think I have another question. So, when we're writing a sentence, should we write a sentence from a second perspective? From a second perspective, like if there is a sentence, what called dislike. So, can we write that he is very vocal about his likes and dislikes? No. So we have talked about it earlier कि हमें he, she, it या फिर पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हुए ये सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं प्राइवेट। और रीजन है इसका क्योंकि वो हमारा लिमिटेड एक्सपोजर दिखाता है लाइफ को देखते हुए। Okay. Yes. Thank you. Yes. Okay. Sagar Kumar, you may ask now. And please also turn on your camera if possible. That would be better. I am traveling right now. Okay, no problem. Please ask. Yes, Sagar, you may ask your doubt. Sir, I am traveling. Please check chat. Okay, sir. Sorry. Well, Sagar, should we not use must, should, can, could these words? I have said, मैंने पहले भी बताया, should, can, could ये modals use नहीं करने हैं, must तभी use करना है जब वो social obligation हो, moral obligation हो या law obligation हो। Obligation कि सबको करना ही चाहिए, must तो हम must use कर सकते हैं, and must भी ज़्यादा words ज़्यादा sentences में use ना करें तो that would be better. 5 to 10 is enough. Okay. Any other doubt? Great. So let's proceed further. अब हमने बात की. Yes, BTS I am recommended not from BTS Army but from Indian Air Force Board. Let's proceed and let's discuss कि अच्छे sentences क्या होते हैं. तो अच्छे sentences वो sentences होते हैं जो Please don't disturb me while using chat. So अच्छे sentences वो होते हैं जो positive opinion बताते हैं. अगर हम किसी word को देख रहे हैं, उस word को किसी positive activity के साथ वो कर रहे हैं, relate कर रहे हैं, associate कर रहे हैं, sentence form कर रहे हैं, तो वो हमारा जीवन को लेकर एक positive नजरिया बताता है. Please BTS, do not ask this kind of these three qualities are being shown up from the sentence. So, and not all personal responses are negative. So, इसमें अगर mother father पे आप sentence बना रहे हो, तो mother father पे sentence बना रहे हो, वो भी negative है. Sorry, वो negative नहीं है. Let me take out a book by Affa and sorry, this was by Ashok sir. So there are very good examples in the book. No problem. So yeah. So now I'm going to speak up some words and I'm going to tell 4 responses. Sorry, 6 responses on these word, on a single word, and we will be analyzing that which word is more good, right? Okay. So the first word is love. Love. So a personal response would be like, I love my father. It is a very personal response. Suggestion, the word is fixed, love, and there's a sentence, one should love his family. So this is Preeti sentence, this is suggestion based.
negative opinion, love is blind. Though it is, but you don't have to mention it and associate it with being blind all the time. There's a positive opinion also. Lovers understand each other very well. So this is a positive opinion about love. And I'm seeing some very good sentences in the chat section. Continue them. Factual sentence. Love makes life happy. This is a factual sentence. And it is also an observational and analytical sentence. This is good quality sentence. So the best quality sentence is observational sentence, which is coming right now. Loving one's profession takes one to greater heights. Loving one's profession takes one to greater heights. So why have I narrated these 6 sentences for you to understand कि अच्छे sentences क्या होते हैं. अच्छे sentences वो sentences होते हैं जो सत्य को दिखाते हैं, जो जीवन में हो रहा आसपास का सत्य है वो रिफ्लेक्ट करते हैं. आसपास की होने वाली चीजों में फिनोमिनास को आप ऑब्जर्व करके एनालाइज करके उस पे एक ऐसा सेंटेंस लिखोगे जो एक ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस है, जो ज्यादातर सत्य होते हैं, जो जिसे कॉन्टेक्स्ट जो सब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं होता. लाइक लविंग वंस प्रोफेशन टेक्स वन टू ग्रेटर हाइट्स. अब ये सत्य भी है, ये ऑब्जर्वेशनल भी है, एनालिटिकल भी है और प्लस में पॉजिटिव भी है. इसमें प्रोफेशन को लव भी किया जा रहा है, प्रोफेशन के बारे में बात भी की जा रही है और ग्रेटर हाइट्स को छुआ जा रहा है. तो डेडिकेटेड पर्सन है. So this is how we can write good sentences, and as well as we can reflect our good qualities while writing good optimum sentences. So let us move on further. Let me read the chat. Love brings people together. Yes, good sentence. Love towards nation grows the nation. Okay. Love makes people powerful. Okay. With love, hatred is cured. Why? This Sagar do not feel like a little pointed out, but हम sentence को discuss कर रहे हैं, आपको discuss नहीं कर रहे. With love, hatred is cured. तो देखो सेंटेंस आपको वर्ड क्या मिला था? लव. आपने लव वर्ड को एसोसिएट किया हेट्रेड के साथ. अभी जो हेट्रेड वर्ड आया है ना, ये आपने अपने दिमाग से डाला है. So this shows there was something negativity in your mind which is now present in a sentence right now. तो आपने लव वर्ड को, नेचर वर्ड को एसोसिएट कर दिया और कोई नेगेटिव वर्ड खुद से डाल दिया. There is a problem in this sentence right now. I hope you understand. Parents' love is unconditional. Yes, this is that is unconditional. Being is unacceptable. Being bully is unacceptable. Yes. So let's now move further and factual sentences. So good sentences. No, I would not say that factual sentences are good sentences. They are just sentences which you are getting away. कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा तो मैं factual sentence लिख के निकल गया. पर वो आप 1 या 2 बार कर सकते हो. I would not suggest you to go with this idea. Like, let me give you an example of factual sentences. अगर जैसे medals है आपके सामने word और आपने लिखा India won 40 medals in 2022 Olympics. So this is a factual sentence. This is also somewhat positive. So you can write it, but do not write factual sentences in 60 for more than twice. There's one more example. If you are a marathon runner and there is a word marathon, and then you are writing in that sentence that Eliud Kipchoge ran marathon at record time of 2 hours. So this is a fact, but but it is like factually that much ambitious. So 1 or 2 sentences like this related to your PIQ can work, but not more than that. ये बस ऐसे ही कि भाई मुझे कुछ नहीं आ रहा था मैं ये लिख देता हूँ. Loving nature is the main quality to live the desired life. Loving nature is the main quality to live the. It is a long sentence, Harsh. So I feel you can shorten this. And that's called the city of love. So Suvajit, it is a very opinionated
scripted sentence. This is not truth. This is not truth. And this can be a fact also, but it is not showing your creative ability and your quality in anything. Yes. Rahul, the recording of this session will be available on YouTube. If anyone having, we have talked about positive opinion sentences. Now we are going to talk about the best sentences, like the best. What are they? Sentences like which shows that you have written an analytical sentence, intellectual sentence, or observational sentence. These three category sentences are very highly desirable and highly awarded sentences by the psychologists. These sentences bring up values and beliefs which you have in yourself. Everyone have their own constitution or principle for their code of conduct. Like सबका जीवन जीने का एक तरीका होता है, उसूल होते हैं, कायदे कानून होते हैं. वो कायदे कानून इन वाले सेंटेंसेस में नजर आते हैं. इन सेंटेंसेस को अच्छे सेंटेंसेस माने जाते हैं. It shows the ability to perceive things under stress and clarity of ideas. स्ट्रेस के अंदर आपकी क्लैरिटी ऑफ आइडियाज कितनी होगी. एनालिटिकल और इंटेलेक्चुअल और ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस तभी लिखे जा सकते हैं जब आपके दिमाग में क्लैरिटी हो. आपने प्रेशर के अंदर भी इतनी गहरी बात सोच ली और वो उसको आपने सेंटेंस बनाकर लिख दिया 15 सेकंड. तो दिस शोज द क्लैरिटी ऑफ योर माइंड. और आपको जो 60 वर्ड्स लिखने हैं तो आपको ट्राई करना है कि आप कम से कम 50 वर्ड्स और मोर देन 50 वर्ड्स आप एनालिटिकल, ऑब्जर्वेशनल और इंटेलेक्चुअली. ठीक है. Good man, don't cheat others. I would request everyone to please do not write sentences for now, क्योंकि हमारे मैवेक्स टेलीग्राम पे एक पर्टिकुलर सेक्शन है, पूरा सेक्शन WAT, पर आप सेंटेंसेस पे सेंटेंसेस लिख सकते हो, दूसरों को रिव्यू कर सकते हो. ये चीज तो बाद में भी हो सकती है, पर मैं और आप यहाँ बैठे नहीं रहेंगे पर. So let's respect your energy and time and mine also. So proceeding further. Yeah. So let's discuss more about analytical, observational sentences. What are they? Like there is a word help. तो आपने जैसे अभी किसी ने helpful nature always pays dividend. तो इस सेंटेंस से पता लग पा रहा है कि हेल्पफुल इस बंदे ने ऑब्जर्व किया है कि हेल्पफुल नेचर रखने से हमें फ्यूचर में फायदा ही होता है. तो दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, दिस इज आल्सो एन ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस. और ये सच बात भी है. हम सबने ये ऑब्जर्व किया है कि बीइंग नाइसर टू पीपल, बीइंग मोर कंपैशनेट एंड हेल्पफुल always helps other and always helps us also. So this is an observational sentence. There can be also other sentences on help. Helping poor improves the society. Helping the lower section of any society will improve the society. That is very much logical. But it is an observational, it is an analysis of the writer which makes him more qualified. जब उसने help लिख रहा है sentence, help पे sentence बनाना था, तो उन्होंने की खुद की पढ़ाई नहीं की, किया है help people a lot often times. So instead of that वो लिख रहे हैं help के एक concept के बारे में, help को एक concept के बारे में जैसे सोचते हुए और एक kind of एक ऐसा सत्यवान सेंटेंस लिख रहे हैं जो सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा एज अ ट्रुथ. आप सब एक्सेप्ट करेंगे इस फैक्ट को कि अगर कोई भी गरीबों की मदद करता है तो समाज का भला होता है. That is very much true. It is observational sentence. You have to target for writing these kind of sentences. और ये लिखने कैसे हैं? How? We will be coming on this later on the discussion as it goes on with the session. अभी हम समझ रहे हैं कि अच्छे sentences क्या होते हैं. Like there is a word life. तो life के एक sentence है कि teaches different lessons each day. There is no mention of like word in the sentence, but the sentence is so beautiful that it teaches different lessons each day. So this sentence has only 5 words, but it shows the curiosity of the person and to take life as an adventure, and also he's having a positive
mindset, and this is an observational sentence. So this sentence is really good. Next word is illusion. Illusion या फिर हम fear पे भी same sentence बना सकते हैं. Fear is an illusion. अब ये जो बात है ये एक एनालिटिकल बात है कि अगर किसी ने fear के साथ अपने fear को कंपेयर किया है, उसने पाया है कि fear कुछ नहीं था, मेरा भ्रम था, वो मैंने तोड़ दिया. तो ये एक एनालिटिकल सेंटेंस है. और इवन इट्स नॉट कि ये नहीं है कि उस कैरेक्टर ने ये बात एक्सपीरियंस की होगी, पर ये सेंटेंस अगर वो इस टाइम प्रेशर के अंदर राइटर लिख रहा है, तो कैंडिडेट है, तो उसकी ये अंडरस्टैंडिंग तो है कि fear is an illusion, which is very much right, and it is an analytical and observational sentence. It is highly excellent. Next word is running. So this person is a runner. इसके PIQ में running marathon भरा हुआ है. रनिंग पे ये लिखते हैं रनिंग improves breathing stamina. तो ये एक फंक्शनल सेंटेंस है, ये एक पॉजिटिव ओपिनियनेटेड सेंटेंस है, जहां पर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को देखते हुए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को एसोसिएट किया जा रहा है विद सम पॉजिटिव आउटकम. So that's why this sentence is particularly good, and ये कोई personal related sentence नहीं है, observational है, and it stands true for most of the people. Yes, so let us take doubts now. So yes, I'm going to tell some names. They have to unmute themselves, and if possible, please turn on your camera also. Yes, my tab official, you can unmute and turn on your camera to ask the doubt. Sir, is there any grammatically conditional words that should not use in the sentences? ग्रामेटिकल कंडीशन ऐसा नहीं है. अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करके आओगे ना WAT में, जैसे आपने आर्टिकल नहीं लगाया, आपने वर्ब में एस या ईएस इधर उधर कर दिया, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वो आपके एक्सप्रेशन या फिर आपके ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को वहां जज नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी इंग्लिश ग्रामर को यूपीएससी ने टेस्ट कर दिया, तो आप पे ठप्पा लग रहा है कि आप मतलब आप एकेडमिकली गुड हो, अब आपकी पर्सनैलिटी को जांचा जा रहा है. तो आपका जो सेंटेंस लिखने के बाद जो मतलब बन रहा है ना साइकोलॉजिस्ट के माइंड में, वो मतलब को असेस किया जाएगा. वो जो आपका रेस्पॉन्स है वो आपकी बात अगर क्लियरली बता पाए तो इतनी ग्रामर काफी है. पर इतनी ग्रामर तो हो कम से कम कि आपको जो लिखना था आपने वो लिखा और वो ही मतलब इंटरप्रेट करे साइकोलॉजिस्ट. तो इतनी ग्रामर चाहिए. बाकी आप अगर मिस्टेक्स कर दो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर दोगे, इट्स फाइन, ओके. अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी तो ये दिखाएगा कि आप एक केयरलेस पर्सन, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स फ्रॉम दैट 12th पास कॉलेज ग्रेजुएट इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल मोस्ट ऑफ द टाइम. यू हैव टू अवॉइड दैट. अगर एक दो बार हो गई तो आपको टेंशन नहीं लेनी, हो गई, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ रीजन प्रॉब्लम. Okay, sir. Sir, another doubt is, can we use some proverbs or idioms because it is also a sentence, right? क्या? Could you repeat? We can use some proverbs or idioms. I'm not aware about it, so could you please say? Idioms or proverbs. No. I would suggest you not to do that. अगर आप idioms और proverbs यूज करोगे तो आपकी क्रिएशन नहीं है, आप अपनी मेमोरी पे रिलाय कर रहे हो. It's better to avoid them. अगर लिख दिए तो कोई गुनाह नहीं कर दिया, पर हो सके जितना अवॉइड करो, और हो सके जितना ऑब्जर्वेशनल पॉजिटिव ओपिनियनेटेड सेंटेंस लिखो. और ये सेंटेंसेस मास में फैक्टर की तरह प्रोड्यूस कैसे करना है इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट जब डिस्कशन करेंगे तो इसी पे बात करेंगे. ठीक है? Okay, great. So next, Surjit, you can ask. So, Sachin, in the span of 15 seconds, if we don't find any sentence that gives us positive response, can we use current affairs in that? Right? In the latest sentence, you said that about running. Can we say that Avinash Pavle secured silver in running 6,000-meter marathon in Commonwealth Games? हाँ, आप फैक्चुअल सेंटेंस भी लिख सकते हो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते दौरान ही सोचोगे कि मैं फैक्चुअल लिख दूंगा, तो नहीं, ऐसी बात नहीं बनेगी. यार अगर आप अभी मतलब कोशिश करो जितना हो सके ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस लिखो. ठीक है? Okay, got it. Thank you. Okay, welcome. Any other person having any more doubt?
Thank you, Sachin, for giving the opportunity. Yes. Actually, Sachin have almost covered everything related to the WAT, and I would like to just reiterate that this is a confirmatory stage in which that psychologist is going to confirm whether you have the wall cues and not. If he has found some wall cues in your TAT, then he will go to confirm those wall cues in your WAT. So it is very necessary and imperative test which cannot be ignored at any cost. मेरे पास 2-3 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि मुझे ऐड करने चाहिए. As Sachin has covered almost everything, कि जब कभी हमारे पास 60 words हैं, we are not all perfect, है ना? We are not master at everything, but we can be a master at something. तो कुछ words हमें नहीं आते उसमें, है ना? तो अगर उसमें वर्ड में आपको कोई उसका मीनिंग नहीं आ रहा तो उसको लेफ्ट ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है कि वी शुड राइट समथिंग. हम उसमें ये लिख सकते हैं कि डोंट नो द मीनिंग ऑफ वर्ड. अदरवाइज ब्लैंक छोड़ने से बैड इम्पैक्ट पड़ता है. दैट इज रियली डेंजरस एंड हार्मफुल फॉर योर डॉजियर. तो उससे अच्छा है कि आप ये लिख दो कि डोंट नो द मीनिंग ऑफ वर्ड इफ यू रियली डोंट नो द मीनिंग ऑफ वर्ड. अदरवाइज नॉट. स्किप करना नहीं है. वहां पर आपकी जो सीक्वेंस है दैट शुड नॉट बी मिसप्रोनाउंस्ड एंड वो मिक्स्ड अप नहीं होनी चाहिए. दैट इज रियली हार्मफुल. उसके बाद जैसे जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है ना दैट शुड बी अवॉइडेड. कि हम जैसे कई बार लिख देते हैं कि हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस इन लाइफ. ऐसे वर्ड्स जो बिल्कुल फॉर्मल वर्ड्स हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए. थोड़े क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड वर्ड्स अगर हम लिखेंगे तो वो अच्छे रहेंगे. जैसे कुछ भाई लोगों ने पूछा था कि नेगेटिव वर्ड्स आते हैं. जैसे बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं. मैं अभी कुछ वर्ड्स ही मैं उसमें ऐड करूंगा. जैसे मान लो बुली है तो बुली के ऊपर हम बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकते हैं. आई हैव जस्ट मेंशन्ड वन सेंटेंस. देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस लाइक बुली. गुड लॉ ऑर्डर इज मैंडेटरी फॉर बुली बॉयज ना. तो एजुकेशन रिड्यूसेस बुलीनेस. ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं. सो देयर इज ऑलवेज possibility to make good sentences. और my last point is कि हम good sentences को achieve कैसे कर सकते हैं. जैसे सुभजीत ने पूछा था कि हम कैसे वो हैबिट डालें कि नेचुरली हमारे पास वो वाली एक राइटिंग की एबिलिटी आ सके कि हम वही सेंटेंसेस लेके which is being checked by the psychologist. तो उसके लिए I would advise कि we must read good things, है ना. कि जैसे आप ब्रेनी कोट्स पे जाकर के कोट पढ़ सकते हैं. उसमें से आपको कुछ आइडियाज मिल सकते हैं एंड दोज आइडियाज कैन बी लेटर ऑन कन्वर्टेड टू योर थॉट्स एंड योर थॉट्स कैन बी जस्ट पेन डाउन इन योर डॉजियर बाय प्रैक्टिसिंग. उसके बाद आप अच्छी बुक्स पढ़े जिसमें आपको, जैसे कल सचिन ने 2 बुक्स बताई थी, दे आर रियली वर्थ टू रीड देम ऑल एंड रीड देम केयरफुली. जैसे आई वाज आस्क्ड वन क्वेश्चन बाय द आईओ कि हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड इन अ ईयर. So I said him ki sir, I don't count that how many books I am going to read, but I count that how many things I have learned from one book. That is important for me. So उस point of view से हमने books पढ़नी है कि हम उनसे कुछ ना कुछ सीख के हमारे mind में retain कर सकें. और वो retention of content that can be penned down when you are going to write your dossier with your subconscious mind and when you are sitting on a fire, है ना. क्योंकि जो हमारा साइकोलॉजिस्ट टेस्ट है, इट इज जस्ट लाइक व्हाइल वी आर सिटिंग ऑन अ फायर एंड वी आर गोइंग टू राइट समथिंग फॉर आवर फ्यूचर. तो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल, है ना. एंड थैंक्स बडी सचिन फॉर गिविंग मी टाइम. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. That's from my side. Please go ahead, Sachin. Thanks to you for like mentioning all those good points. And yes, it is definitely very much an prerequisite for writing good sentences and for producing a creation of any good thing that you must be having something good here. Then only it will get printed on the paper. Then it will only get produced in the paper. So you must have a good psyche. For that, please make sure, जैसे हम ध्यान रखते हैं ना कि हम जिम जा रहे हैं तो हम अच्छा खाना खाएं. हम ये नहीं खाएंगे, हम ये खाएंगे, ये खाएंगे. तो उसी प्रकार से हम जो अपने दिमाग को कंज्यूम करवा रहे हैं 24 घंटे via our phone, laptop, books में तो सभी अच्छा होता है. पर जितना भी हम कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं तो हम ध्यान रखें कि ये कंटेंट हमारे लिए अनहेल्दी है, ये हेल्दी है. तो ये वाला पर्सपेक्टिव रखोगे ना तो you are going to make a good psychology and
पढ़ते सीखने के बहुत तरीके हैं, तुम्हें जो पसंद हो वो करो, पर ये कोशिश करना कि आप उसकी तलाश में रहो, ठीक है। दैट्स मीन। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि आपको प्रोवर्ब्स अवॉइड करने हैं लिखने, लिख दिए तो कोई बात नहीं किया, ठीक है। So there are some points to remember. Write as much responses as you can. मैं कहूँगा पूरे साथ लिखो, ठीक है। और अगर एक दो छूट गया है वर्ड तो वहां उस वाली लाइन में वर्ड लिख दो और फिर आगे बढ़ जाओ। फिर आप जब एसडी लिखोगे अगला, एसडी जल्दी आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आपने पढ़ना देखा ये वाले वर्ड में कहीं पर कमी है तो वो वर्ड आप पूरा कर सकते हो। ये निंजा टेक्निक आप यूज कर सकते हो। डोंट राइट डार्क, डोंट राइट जोक्स। मैं ये गलती कभी कभी करता हूँ कि सेंटेंसेस लिखते वक्त जोक लिख दिया सेंटेंस की जगह, तो वो गलत हो जाता है क्योंकि वो वहां पर आपको जज किया जाएगा। और जोक्स डोंट वर्क दैट वे। जोक्स आर ऑलवेज एंटी ट्रू और एंटी मोरलिस्टिक इन नेचर। कॉमेडी इज ऑलवेज लाइक दैट। सो प्लीज डोंट राइट सच थिंग्स, डार्क और नेगेटिव और जोक्स सेंटेंसेस। सेंटेंसेस अगर आप जैसे सेम आइडिया पूरे में नहीं लिख सकते। जैसे एक वर्ड आया हार्ड तो आपने लिखा हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। अगला वर्ड आया लीड तो आपने लिखा हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। अगला वर्ड आया सक्सेस तो आपने वापस लिखा हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको यूनिक सेंटेंसेस लिखने होंगे। हार्ड में अगर आपने मान लो लिख दिया हार्ड वर्क लीड्स, दैट्स गुड। अगर वर्क है अगला सेंटेंस तो आपको कुछ और लिखना होगा। Work brings satisfaction to soul. Something unique or something different. The idea must be different. उसके पीछे एक सेंटेंस अगर ये नहीं कह रहा तो सक्सेस को ग्रामर चेंज करके लिख दो, सक्सेस इज ब्रॉट बाय हार्ड वर्क। नो, ये नहीं करना। आपका आइडिया अलग होना चाहिए। दैट्स माय पॉइंट कि आपको यूनिक आइडिया लिखना है हर सेंटेंस में, को रिपीट नहीं करना। Expression is important. Your sentences must be able to express your idea clearly for fair assessing. आपको ऐसी हाई सेंटेंसेस फिलोसॉफिकल लैंग्वेज यूज नहीं करनी कि नो thyself लिखा है वहां। आपको बस इतनी ही ग्रामर आनी चाहिए ताकि आप जो मतलब समझाना चाहते हो वो मतलब साइकोलॉजिस्ट को समझ में आए, बस इतनी ही। और ज्यादा जरूरी नहीं कि आपने आर्टिकल लगाना है, अपोस्ट्रोफी, कोमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाने हैं, एनीथिंग। ओके, आप उन छोटी मोटी चीजों को अवॉइड कर सकते हो। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, जो बताना है वो चीज समझ में आए, आपको बस इतना ध्यान रखना। यूनिवर्सल एंड फेमस एब्रीविएशंस आर एक्सेप्टेड, जैसे WHO, ये वाली एब्रीविएशन सबको पता हो। पर आप अगर GTO सर के लिए जैसे लेमाओ लिखा होगे WAT सेंटेंसेस में साइकोलॉजिस्ट के सामने, जो कि नॉट अ वेरी फेमस एक्रोनियम है या फिर शॉर्ट फॉर्म है, तो आप वो सब यूज करना अवॉइड करिए। सो नाउ लेट्स कम टू डिफरेंट काइंड ऑफ WAT सेंटेंसेस। इससे पहले हमने बात की कैटेगरीज क्या क्या हो सकती है, और अभी हम जैसे करंट अफेयर्स बेस्ड फैक्ट आप लिख सकते हो नहीं लिखने पर, फिर एक दो गलती से लिखे गए, दैट्स ओके। प्रिंसिपल्स और लॉज व्हिच यू बिलीव आर ट्रू। Okay, so this is these sentences are really very highly acceptable by the psychologists. तो जो प्रिंसिपल, लेट मी रिपीट, प्रिंसिपल्स सिद्धांत आपके, और लॉज व्हिच यू बिलीव आर ट्रू, जो आपको लगता है कि ये सिद्धांत और ये मेरे उसूल हैं जो सत्य हैं, आप उन पे सेंटेंस जरूर बनाइए, ठीक है, क्योंकि वो आपके वैल्यू और बिलीव को रिफ्लेक्ट। रियल लाइफ एग्जांपल्स आप लिखना थोड़ा अवॉइड कीजिए, और साइंस बेस्ड फैक्ट ये सब मतलब नहीं लिखना, ठीक है। So now first idea, thought, emotion after seeing the word should be presented in a sentence as per the psychologist. Okay, represent your whole, that will represent your whole personality. It's not about a violent soldier mindset but a good sense. तो देखो वर्ड को देखते ही ना हम एसोसिएट करते हो। अब हम WAT का मतलब समझेंगे सबसे पहले। इससे मतलब अभी हम WAT का मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम अच्छे सेंटेंसेस किस टेक्निक से बना सकते हैं, ठीक है। उससे
पहले हमें समझना पड़ेगा कि WAT होता क्या है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट 15 सेकंड के प्रेशराइज टाइम पीरियड में आपके सामने एक वर्ड आया, वर्ड को देखते ही आपने वर्ड का मतलब समझा, पहले स्पेलिंग लेटर्स पढ़े लेफ्ट टू राइट, फिर आपने उस वर्ड का मतलब समझा, मतलब समझने के बाद में आपको फिर आपको उस मतलब उस वर्ड को आपने किसी चीज के साथ एसोसिएट किया और फिर उस एसोसिएशन या उस एसोसिएशन पे आपने सेंटेंस लिखा। जैसे मैंने देखा मदर सेंटेंस मैंने पढ़ा, मदर वर्ड मैंने पढ़ते ही दिमाग में एसोसिएट किया विद लव एंड केयर व्हिच मदर्स गिव, फिर उस एसोसिएशन पे मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम हमारे एसोसिएशन को अच्छा बनाएंगे, अगर हम हमारे हर वर्ड को देखते ही हम हमारे एसोसिएशन एक पॉजिटिव और एनालिटिकल एसोसिएशन पर काम करेंगे, तो हमारे जो सेंटेंस आएंगे प्रोजेक्ट पर वो अच्छे होंगे। ठीक है, सिंपल फैक्ट। और ये प्रोसेस इतनी फास्ट प्रेशराइज मेथड या मैनर में करनी होगी हमें, ताकि हम जल्दी अच्छे सेंटेंसेस लिख पाए। यस भाई। Yes, just adding to Sachin's last point, is sometimes if we feel that you are unable to complete your sentences as per your wish you want to write in your dossier, it is not a point of worriedness. You can just जैसे सचिन ने बताया कि एक फर्स्ट वर्ड को सेकंड वर्ड के साथ आपने एसोसिएट कर दिया, सो दैट इज वेरी मच इनफ टू एनालाइज योर पर्सनालिटी बाय द साइकोलॉजी विद केयर एंड with dinner, with meals, and with food, or with home in nostalgia or something like that. Definitely you would be able to understand that you have moral ethics, you have love with your mother, so it is enough, and it is not to worry that if you are unable to complete your sentence at some circumstances, it's a point. And उसके बाद मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि नो वर्ड टू बी लेफ्ट ब्लैंक अनलेस मीनिंग इज नॉट नाउन। उस कंडीशन में भी अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप वर्ड अकेला वर्ड लिख करके भी छोड़ देगो, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन अर्लियर। एंड उसके बाद जो हमारा फर्स्ट एसोसिएशन विद द वर्ड, जो जैसे हम स्ट्रेच करते हैं किसी वर्ड को, हम नॉर्मली हम स्ट्रेच करते हैं उसके साथ अदर वर्ड्स अटैच करके, वो वर्ड शुड नॉट बी नेगेटिव एट एनी कॉस्ट। जैसे एक वर्ड आया कि हेटर, तो हेटर के साथ आप मतलब जेलसी लगा दोगे तो दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम विद यू आल्सो, तो वो पर्सनालिटी हमने शो नहीं करनी है। अगर हेट वर्ड लिखा है तो हेट के साथ पॉजिटिव या न्यूट्रल वर्ड ऐड करना है, उसके साथ नेगेटिविटी नहीं डालनी। ओके सचिन, गो अहेड प्लीज। No, I was just adding कि forced negativity नहीं डालनी। Yes, similar to TAT. Actually, this is a confirmatory. This is the sister test of TAT. कि वो उसी में से ही चेक करता है कि भाई अगर forced negativity हम TAT में भी डाल रहे हैं कि unless there is no depicted negativity in the picture, we should not take any kind of outside problem which is not even imagined by anybody out of the box. So similarly happens with the WAT when we are going to write any sentence on any of the words. चाहे वर्ड कुछ भी हो, नेगेटिव वर्ड है तो उसको हमने पॉजिटिव वर्ड के साथ ही वहां पर प्रिटेंड करना है, भले आपके मन में रियलिटी में समथिंग इज गोइंग ऑन, बट वहां पर लिखते समय ये चीज प्लीज माइंड में रखना है कि वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग नेगेटिव विद दैट पर्टिकुलर वर्ड। ओके सचिन, गो अहेड प्लीज। यस, वेरी वेल कवर्ड। तो अभी हम आगे बात करेंगे कि अच्छे सेंटेंसेस कैसे लिखें, सिर्फ ये बात नहीं होगी, किस टेक्निक, किस टूल को हम यूज कर सकते हैं टू राइट गुड सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अश्विनी भाई ने बताया कि टू राइट और टू क्रिएट समथिंग गुड, यू हैव टू हैव समथिंग गुड हियर आल्सो। सो प्लीज स्टार्ट रीडिंग, प्लीज स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर ट्रू टू पर्सनालिटी, एंड प्लीज watch content which will update your personality. You should update your personality and your understanding of life and concepts around you. Okay, explore it. So now onto the technique. So अभी हम इस वाले में कवर करेंगे कि कुछ WAT sentences होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। जैसे कई बार
कि ह्यूमन पे या फिर कोई प्रोफेशन पे या कोई रिलेशन पे सेंटेंसेस आते हैं, सिस्टर पे, हेडमास्टर पे, और टीचर पे, प्रोफेशन पे आ गया, डॉक्टर पे आ गया, ब्रदर, लॉयर, स्पोर्ट्स पर्सन पे आ गया। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स आ जाते हैं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी पे आ गया, ब्यूटीफुल पे आ गया, केयर पर आ गया। कुछ नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे ब्लड, बॉम्ब। एक्चुअली नेगेटिव नहीं होते, हम जज करके चीजों को नेगेटिव पॉजिटिव बनाते हैं। बाकी हाँ, अगर हमने जज कर लिया इतने सालों से तो नेगेटिव ही बोल देते हैं। तो लाइक ब्लड, बॉम्ब, एंडिंग, ओके, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। एंड देयर आर सम न्यूट्रल वर्ड्स, दे आर जस्ट न्यूट्रल, लाइक टेबल, ओके, टेबल इज a word which is very neutral. Shoes, coat, t-shirt, laptop, these are neutral words. और कुछ क्वालिटेटिव वर्ड्स होते हैं, एग्रेशन, डिसिप्लिन, ओके। सो इन वाली कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं ज्यादातर WAT में। अगर आपको और कोई कैटेगरी दिमाग में आ रही है तो प्लीज चैट सेक्शन में लिखो, हम उस पर बात करेंगे। तो पहली कैटेगरी है ह्यूमन। ह्यूमंस क्या तो वो हो सकते हैं ह्यूमन के प्रोफेशन पे वर्ड या फिर किसी रिलेशन पे। तो ऐसा अगर कोई वर्ड सामने आए आपके, तो आपको एक सिंपल चीज करनी है कि आपको उस वर्ड्स को एसोसिएट करना है उस ह्यूमन की कोई अच्छी क्वालिटी से, या फिर अगर कोई प्रोफेशन है तो उसके कोई अच्छे फंक्शन से। ठीक है, कोई अच्छी क्वालिटी या फंक्शन से हमें उस ह्यूमन को एसोसिएट करना है। इस तरीके से अगर हमें डायरेक्शन मिल गई तो हम ऑटोमेटिकली कहीं पॉजिटिव जगह पर पहुंचकर अच्छा सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से लॉयर इज द वर्ड, ओके। तो हमने लॉयर साहब को उनके फंक्शन पर जज किया, मतलब उनके फंक्शन से एसोसिएट किया लॉयर वर्ड को। सो लॉयर क्या करते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं। मतलब टाइम लग जाता है, मैं समझता हूँ, पर हम फंक्शन समझ रहे हैं, सो लेट्स डोंट क्रैक जोक्स। हाँ, तो लॉयर क्या करते हैं, न्याय दिलाते हैं। सो हमने एसोसिएशन बना लिया, हम सेंटेंस लिख देंगे, लॉयर हेल्प्स पीपल इन गेटिंग जस्टिस। How beautiful this sentence is. It is also positive, observation, analytical. ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, आप कुछ चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो, हम सेम टेक्निक को यूज करते हुए अच्छे सेंटेंस। जैसे टीचर, ओके। सो टीचर एक प्रोफेशन है, हम अब उस प्रोफेशन का फंक्शन क्या होता है कि वो हमें कब से बचपन से सिखाया गया, गुरु जो हमें सही डायरेक्शन में जाते हैं। तो हमने गुरु जैसे टीचर है उनको एसोसिएट किया उनके फंक्शन, अच्छे फंक्शन के साथ, और उनके सेंटेंस बना दिया कि टीचर्स गाइड स्टूडेंट्स ऑन राइट पाथ। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस है, पॉजिटिव है और टेक्निक से जल्दी बना। वी कैन टेक मोर एग्जांपल लाइक ब्रदर। ब्रदर को हम एसोसिएट करेंगे उनके कोई फंक्शन से या फिर उनकी कोई अच्छी क्वालिटी, लाइक ब्रदर्स। We can take the example of elderly brothers. वो हमारे लिए मेंटोर की तरह होते हैं, ठीक है। तो उनकी क्वालिटी हो गई being a mentor. So brother is a guiding light, और brother share insightful advice. So ये हम क्वालिटी या किसी के फंक्शन बता रहे हैं। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी वर्ड आए ह्यूमन से रिलेटेड, तो आप उस ह्यूमन की, उस प्रोफेशन की, उस रिलेशन की फंक्शन या क्वालिटी बता दो। जैसे हमने ब्रदर अभी एक रिलेशन की बात की, लेट्स से मदर की हमने बात की, तो उनकी मदर को हमें उनकी क्वालिटी के साथ देखना है। तो उनकी क्वालिटी क्या होती है, केयर, लव। तो हमने उस पर सेंटेंस बना दिया, मदर्स केयर शोज हर लव। कि जो बार बार फोन करके पूछते रहते हैं ना, वो केयर, वो उनका प्यार होता है, वो इंक्लूड नहीं कर रहे होते। तो हाँ, हम इस तरीके से सोचकर अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं। Anyone having any sentences about any human कि आप जिस पे बनाना चाहो, let's say for father, okay? Father उनकी क्वालिटी हार्ड वर्क, okay? So father's hard work inspires children. अभी मैंने spontaneous बनाया, गलत भी हो सकते हैं। You can rate my sentences out of 5. Please rate them in chat section now. Please write 1, 2, 3, 4, 5, where 5 is the highest rating. I have made the sentence.
पॉजिटिव क्वालिटी या फिर उनके फंक्शन पे हमने उनको एसोसिएट करके वो सेंटेंस बना देना है। अभी हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड्स जो ऑलरेडी पॉजिटिव है, लाइक से ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एक वर्ड है, अगर आप मान लो आपके सामने, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, 6/5, थैंक यू। सो ब्यूटीफुल एक वर्ड है आपके सामने, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने आप को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि अगर ऑलरेडी स्टिमुलस ही इतना पॉजिटिव है तो आप ऑलरेडी आप ऑटोमेटिकली उस चीज को अच्छी चीजों के साथ एसोसिएट करो, तो आपको मतलब हम घूम फिर के ना बात सारी एसोसिएशन पे आ जाती है कि वर्ड को हमें किसी अच्छी चीज, अच्छी एक्टिविटी, क्वालिटी के साथ एसोसिएट करके उस पे सेंटेंस लिखना है, दैट्स इट। अब ब्यूटीफुल पे हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? ब्यूटीफुल को दिमाग में सोचते ही नेचर आता है, मून आता है, स्काई आते हैं, ट्रीज आते हैं, प्लांट्स आते हैं, तो एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन नेचर, राइट? वी कैन राइट अ सेंटेंस लाइक दिस ऑन ब्यूटीफुल, ठीक है। और जैसे कोई पॉजिटिव वर्ड हम लेते हैं, लाइक लव। लव इज अ वेरी पॉजिटिव सेंटेंस, सो लव को हम जैसे एसोसिएट करते हैं, सो इट फॉर्म्स अ रिलेशनशिप, तो हम उस पे सेंटेंस बना सकते हैं कि लव बाइंड्स पीपल टुगेदर, ओके। सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज वेरी पॉजिटिव, एंड यस वी कैन राइट पॉजिटिव वर्ड्स पे सेंटेंस बनाने बहुत आसान है, आपको बस वर्ड के बारे में सोचना है, अच्छी चीजें आएंगी लिखते हैं, सिंपल, और अच्छी चीजों के साथ एसोसिएट करना है। कभी लव को सुनते ही आपके एक्स याद आएगा, दो पे पीओ अपने ट्वेंटी सेंटेंस में, वो सब नहीं कर रहे हैं। सॉरी मैं जोक मार रहा हूँ, सो दैट आवर सेशन। नेगेटिव वर्ड्स को आपने पहले बहुत ज्यादा सुना होगा कि आपको रेमेडियल अप्रोच यूज करनी है, और अगर बहुत ज्यादा सुना है तो वही टेक्निक आपको फॉलो भी करनी है। अगर आपके सामने कोई कांड या प्रॉब्लम सामने आ गया, दैट इज सिंपल, प्रॉब्लम है, सोल्व कर दो। टीएटी में नहीं होता, पिक्चर में अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो अच्छी स्टोरी बन सकती है, ये तुम्हें थीम के बारे में नहीं सोचना, प्रॉब्लम को सोल्व कर देना, अच्छे एक्शन से। बस यहाँ पर भी एक ही बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके सामने एक वर्ड है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, उसको सॉल्व कर दो, पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सही वर्ड्स को प्रॉब्लम की तरफ परसीव करना है। लाइक रेप एक वर्ड है और वो प्रॉब्लम है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, बट अगर आपने ब्लड एक वर्ड है, तो ब्लड एक प्रॉब्लम नहीं है, blood is not a problem, blood is a fluid, it's a vital fluid which flows inside of human body which makes us alive। तो ऐसे वर्ड्स को आपको नेगेटिव नहीं मानना, ब्लड इज जस्ट अनदर थिंग और इट्स जस्ट अनदर न्यूट्रल वर्ड, ठीक है, आपको उसे नेगेटिव नहीं मानना है। क्राइम इज अ नेगेटिव वर्ड, ओके, थेफ्ट इज अ नेगेटिव वर्ड, तो इन सारे जो नेगेटिव वर्ड्स हैं इन पे रेमेडियल सेंटेंसेस बनाना है। फॉर एग्जांपल हाईजैकिंग इज अ वर्ड, सो आई हैव रिटन अ सेंटेंस, मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स प्रिवेंट हाईजैकिंग। सिंपल, हमने यहाँ पर प्रिवेंशन देखो, जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्या हम कर रहे हैं, हमें उस चीज को मिटिगेट करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है, या फिर हम प्रिवेंट करना है कि वो चीज हो ही ना, प्रिवेंशन कर दिया, वो चीज हो ही नहीं रही जो गलत काम, या फिर हम जो गलत काम हो रहा है जैसे डिप्रेशन, उसे हम ओवरकम कर सकते हैं, कोई डिसऑर्डर है उसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस, प्रिवेंट और ओवरकम, प्रिवेंट, रिड्यूस और ओवरकम, ये वाली एक शॉर्ट टेक थी, मैंने किसी साइकोलॉजिस्ट के यूट्यूब वीडियो से सीखी, तो आप पीआरओ करके याद रख सकते हो। यस भाई, speak. Yes, one more that we have many synonyms where we can add remedial sentences on such kind of negative words. That one is also we can use, that is curb and mitigate and resolve as well as stop. So these kind of remedial words can be useful while we are being encountered by the negative words during writing of WAT. जो नेगेटिव वर्ड्स जो है ना वो इजी होते हैं, उनके रिस्पॉन्सेस आर इजी देन राइटिंग नॉर्मल वर्ड्स से। अगर नेगेटिव वर्ड्स बंद नहीं करना है, अंदर ही हूँ, बंद मत करना, अंदर ही हूँ, नेटवर्क तेज आता है ना, इसलिए बैठा हूँ। rather than finding a problem and then write a story. So similar in WAT, if there is a negative word, we have remedial sentences, we have
sentences related to stop them from doing such kind of activities in the society, और उस evils को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो वो easy है. और ये वाले जो words हमने discuss किए जैसे stop, mitigate, resolve, overcome, है ना, these kind of words can be associated with the negative words. Thank you. Yes. Yeah, remedial verbs. These are very helpful in writing these sentences. And if you want more of those, तो आप WAT section में जाओगे, Mavericks के में, और pinned message check करोगे, तो आपको at least 60-50 words मिल जाएंगे, जहाँ पर हमने सिर्फ ये verbs लिखे हैं, resolve, overcome, mitigate, ये सब. तो आप वहाँ से रट्टा मार सकते हो. रट्टा नहीं तो आप सिर्फ एक बार पढ़ोगे तो याद रहेगा. Next category of words is neutral words. Neutral words. So neutral picture की तरह ये भी थोड़े से typical होते हैं. So the only trick, the only concept whichever we are discussing in this technique discussion is that you have to associate them with some good quality, good function or good activity. So this will automatically make our sentence more positive. For example, if there is a word like table, which is neutral word, पर आपको टेबल को एसोसिएट करना है कोई पॉजिटिव क्वालिटी फंक्शन या एक्टिविटी के साथ. तो पॉजिटिव एक्टिविटी हो सकती है, सॉरी फॉर माय हैंड मोमेंट्स, पॉजिटिव एक्टिविटी हो सकती है पढ़ना. ठीक है, हम टेबल पे पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाई याद आ गई. स्टडीइंग ऑन टेबल इंक्रीजेस फोकस. दिस इज एन एनालिटिकल सेंटेंस, ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस. वी हैव मेड इट विद अ टेक्निक, राइट? सो इट्स अ गुड सेंटेंस आई गेस. अब टेबल को हम जिसके घर में डिनर टेबल होती है तो वो ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हैं कि डिनर टेबल टाइम bonds the family, bonds the family closely. आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हो. यस भाई. अगर जैसे सचिन अच्छा बताया, वैसे उसमें हम और ऐड कर सकते हैं कि हमने ना जो न्यूट्रल वर्ड्स हैं उनको कोशिश करना है हाई फॉर्म में लेके जाना है, हमने डाउनग्रेड नहीं करना है. हाई फॉर्म में लेके कैसे जा सकते हैं कि जैसे कि स्टडी ऑन टेबल इंक्रीजेस टाइम, स्टडी ऑन टेबल इंक्रीजेस फोकस. ये तो ठीक है, मतलब दे आर रियली गुड सेंटेंसेस. इन केस यू आर हैविंग गुड पोटेंशियल टू राइट सम वर्ड्स वेरी एनालिटिकली, सो आप ये भी बोल सकते हो कि टेबल नेगोशिएशंस हेल्प्स रिजॉल्विंग इश्यूज, है ना. टेबल नेगोशिएशंस इंक्रीज आइडियाज. तो ऐसे करके मतलब वी कैन कोरिलेट सो मेनी हाई फॉर्म वर्ड्स विद एनी ऑफ द न्यूट्रल वर्ड्स. यस सचिन, गो अहेड. I was adding a point. It is really insightful. हमें सिर्फ यही नहीं करना कि न्यूट्रल वर्ड के बारे में अच्छी चीजें बता रहे हैं, हम उसको और भी अपलिफ्ट कर सकते हैं. That's even higher level idea. So yeah, for example, shoes से आप एसोसिएट करोगे कि spiked shoes boost pace. This is also a factual sentence, but अगर आपके PIP में रनिंग है तो it will somewhat work. Anyways, कोट का फीचर बता सकते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी बता सकते हैं. सेम हाँ, there are some words जिसको हम नेगेटिव समझ लेते हैं पर वो होते मतलब न्यूट्रल है. जैसे ब्लड हमने बात की. एंडिंग इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड. इसको हमने नेगेटिव बना दिया सोच के कि हम मर जाएंगे, वो खराब नहीं, वो खराब नहीं होता. It is just a beautiful concept that something comes and something goes, and which makes it even more beautiful and precious moment. हमारे जीवन का टाइम तभी तो प्रेशियस है क्योंकि ये लिमिटेड है. अगर हमें यहीं रहना होता तो समय को बर्बाद करो, खूब रील देखो, कोई लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है आदमी ज्वाइन करने की. वो एनीवेज, यस भाई. यस अश्विन भाई, प्लीज. Sachin, actually it was by mistake, but कोई बात नहीं, I will add something कि basically this is the test of belief. तो जैसे अभी एक शू वर्ड बोला था कि मतलब if there is a word that is known as a shoe, तो शू के ऊपर mostly of becoming an officer in the armed forces, so we will definitely relate this shoe word with running, jogging, exercising, gymming or something like that, है ना.
तो इसको अगर हाई फॉर्म में भी लेके जाना है तो आप प्रोडक्शन में भी लेके जा सकते हो. समवेयर इफ somebody is related to business, तो आप शू कंपनी को भी मतलब if there is no idea coming to your mind and if something is coming to your mind with relation to enhancing business of shoe factory, that can also be added. That is not negative and that is not a general idea. तो जनरलाइजेशन से बचने से अच्छा है कि आप उसको और उससे जो शू जैसे हम पर्टिकुलर सेंटेंस लेते हैं तो उसमें लिखेंगे कि गुड क्वालिटी शू हेल्प इन रनिंग. तो इसका मतलब है कि आपको अगर अच्छे शू नहीं मिलेंगे तो आप भागोगे नहीं. तो ऐसा नहीं है यार, उसमें क्वालिटी शू हेल्प्स इन रनिंग, इट्स अ वेरी जनरल आइडिया. बट हम ये लिख सकते हैं कि while running, है ना, जब हम भागते हैं while running, the quality shoe may increase your performance. Helps in running is a common idea. रनिंग हम नॉर्मल शू में भी करेंगे, बट कोई अच्छी क्वालिटी का शू होगा तो हमारी परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है. जैसे स्पाइक्स हैं, स्पाइक इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ शू, वो नॉर्मल नहीं है. तो है ना, तो स्पाइक जो है दैट इज अनदर काइंड ऑफ शू, तो वो हमारी परफॉर्मेंस को हाइक करता है. अगर हम नॉर्मल शू में भागेंगे और एक बंदा स्पाइक पहन पे भागेगा तो उसकी परफॉर्मेंस विल डेफिनेटली बेटर देन दोज हु आर वेयरिंग नॉर्मल शूज. तो ऐसे करके जितने भी वर्ड्स हैं उसको कंपैरेटिवली अगर हम बनाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पर हर चीज कंपैरेटिवली देखी जा रही है कि जो भी कैंडिडेट, इफ somebody is proving himself in the right manner and somebody is not able to prove himself in a right manner in the projection system of the psychologist, then definitely will get negative marks. तो इसलिए हमने कंपैरेटिवली अच्छे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है, जनरलाइज्ड आइडियाज नहीं देने वहां पर. यस सचिन, प्लीज गो अहेड. Yes, very well pointed out. Otherwise तो मैं सारे सिंपल सेंटेंसेस बनवा देता. हाँ, हमें क्वालिटी इंप्रूव करने की हमेशा ट्राई करते हैं. यस अमन भाई, प्लीज स्पीक. Sir, we can write that Bata is one of the best shoe company. But that is a fact, right? Yes. Yaar, Aman, sorry Sachin to interrupt you. Actually, Aman, I would like to ask you a question. If you are writing this sentence that Bata is a quality shoe company, where is your quality in this sentence? जब बच्चा 5वीं क्लास में हो जाता है ना तो उसको पता चल जाता है कि बाटा कंपनी अच्छी है, फिर पूमा के शू अच्छे हैं, एडिडास के अच्छे हैं, जहाँ मतलब देयर आर मेनी अदर कंपनीज की उसके शू अच्छे हैं, है ना. सो इट इज अ जनरलाइज्ड फैक्ट. प्लीज अवॉइड दैट. वी कैन यूज सम अदर सेंटेंसेस इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ दैट. यस डेफिनेटली. तो भाई ने कारण बता दिया कि व्हाई शुड यू अवॉइड, क्योंकि वो फैक्चुअल है, वो आपकी क्वालिटी नहीं शो कर रहा. और क्यों ना हम अपनी क्वालिटी शो करें, except wasting our time in psychologist time. Yeah. So if there is a general sentence like laptop, तो हम लैपटॉप जैसे हमारे जीवन सुधारते हैं वो आप लिख सकते हो, like laptop is a good teacher. So this is all about the association of things, words, people, human, all categories with some positive words, activity, quality or function. And the higher the quality or the function, the higher the perspective of you to observe the greater quality, it will improve the quality of sentence. Right. For example, अभी हम सेंटेंस पर डिस्कस कर लेते हैं. तो आई एम नॉट श्योर कि कौन सा वर्ड था अश्वनी भाई जो आपने एक सेंटेंस बताया था ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. तो पॉइंट ये है कि आप जनरल बेनिफिट बताने से बेहतर अगर आप वो एनालिटिकल सेंटेंस बताओगे जो ट्रूथफुल है, that particular truth is standing true for the majority and which requires some analytical and deep thinking to observe the reality. तो ये आप इसके साथ improve कर सकते हैं. And
क्वालिटी वर्ड है ऑलरेडी, जो हम एसोसिएट कर रहे थे ना इंसानों को, चीजों को उठाकर किसी क्वालिटी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। अगर आपके पास डायरेक्टली क्वालिटी है लाइक एग्रेशन और डिसिप्लिन, तो आप उन्हें वापस चीजों और इंसानों के साथ एसोसिएट कर सकते हो। और लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एग्रेशन एज अ वर्ड, तो आप उसे स्पोर्ट्समैन के साथ पॉजिटिवली एसोसिएट कर सकते हो, लाइक स्पोर्ट्समैन एग्रेशन थ्रिल्स ऑडियंस, सो दिस इज रिवर्स एसोसिएशन। ठीक है, पर मुझे घुमा फिरा के बात एक समझ में आ रही है फिलहाल कि हमने जो टेक्निक डिस्कस की है कि हमें वर्ड्स को लेना है, एसोसिएट करना है उनके कुछ गुड क्वालिटी फंक्शन या फिर गुड एक्टिविटी से। पर इसमें दिक्कत ये हो रही है कि जो हम एसोसिएट करने का लेवल भी है ना, वो हम अपने अपने दिमाग से लगाएंगे, सबका दिमाग अलग होता है। तो मेरे लिए कोई किसी चीज की क्वालिटी अलग होगी, लाइक I'll write about running shoes, that running shoes prevent our feet from rough friction of roads, like, और कोई और लिखेगा कि it provides comfort, कोई और लिखेगा कि इससे पेस बढ़ेगा। So हम अलग अलग चीजों पे, कोई commercial person will look at it from a different way, some person who wears a branded sneakers, so he will look at things in different way, he will associate qualities as per his subjective.
जो बातें हम बता रहे थे वो मैंने पॉइंट कवर कर लिया अबाउट होल WAT. So is there any doubt anyone regarding WAT? Any doubt? No doubt. इतनी अच्छी क्लास थी. Great. So should we discuss about SRT now or not? Because SRT is very like mundane thing. So निपटा देते हैं इसे. ठीक है. So SRT is a 30-minute test. It is the third psychological test in which we are given. It is a conscious test. जहाँ पर ना हमें kind of questions मिलते हैं. 60 questions मिलते हैं. Yes, 60 questions, 60 situation मिलते हैं और उनके हमें subjectively हमारे हिसाब से जो solution होगा वो हमें लिखने हैं 2 lines. ठीक है. So 60 questions, 30 minutes. For every response, we have 30 seconds if you have to complete all the SRTs. But I would recommend you otherwise that quality matters. So instead of focusing on the quantity and number only, please also focus on quality because whatever situation you are going through, first you have to make sure that the situation is under control now and then move forward to the next situation. Like this is what you do in real life, right? So I expect you to do the same in SRT by writing SRTs also. Try to keep it short. Try to write it in short manner using commas and only writing verbs. Do not write pronouns again and again. Just likho, he went there, did this, sold, done. दो लाइन अगली सिचुएशन. आप SRT लिखते हो, आपको माइन्यूट डिटेल्स भूलनी नहीं है. आपको प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करना है. जुगाड़ नहीं करना है कि ये जुगाड़ हुआ आगे बढ़ गया. नहीं, आपको प्रॉब्लम को जड़ तक सॉल्व करना है. जैसे अगर गैस लीकेज था तो आपको सिर्फ खिड़कियां खोलकर अगले SRT पर नहीं जाना है. खिड़की खोल दी भाग नहीं लगी. नहीं, वो खिड़कियां भी खोलनी है. गैस जहां से लीकेज था उसकी पाइप को खोल मतलब उस लीकेज को बंद भी करवाना है और वो लीकेज दोबारा ना हो इसलिए वो सिलेंडर या फिर वो जो पाइपलाइन वो चेंज भी. तो डीप में जाकर पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करो. क्वालिटी उसी से बढ़ेगी रेस्पॉन्स की. और बाकी आप प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हो थोड़ा बहुत कि ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है और GRP और RPF में डिफरेंस क्या है. ऐसे माइन्यूट डिफरेंसेस आप इसलिए सेक्शन में. पर ये तो मतलब बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है. आप जैसे रियल लाइफ में चीजों को ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन करो कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, कैसे सिविक सोसाइटीज काम करती है. तो वहां से आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती होगी. आपकी क्वालिटी ऑलरेडी लाइक इटसेल्फ इंप्रूव हो जाएगी अपने आप में. अभी बात करते हैं सीक्वेंस से कि एक सिचुएशन आपके सामने आई, जीवन में आपके सामने एक समस्या आई, आपने उसको सॉल्व कर दिया. दूसरी समस्या आई, आपने सोचा ये हार्ड है तो मैं भाग जाऊं, इस SRT को छोड़ देता हूँ, दूसरी अडॉप्ट कर लेता हूँ. नहीं, तो आप रियल लाइफ में नहीं करोगे. प्रॉब्लम आएगी तो आप सॉल्व करोगे. तो SRT को सीक्वेंशियल फॉर्म में अटेम्प्ट करना है. एक से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी का सॉल्यूशन लिखते जाओ. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनी गुड नंबर, कितना गुड नंबर होता है कि आपको इतनी SRTs अटेम्प्ट करनी चाहिए या नहीं. I don't have any particular idea about that. I have heard about people who wrote 60 SRTs and got recommended. And I have heard about people who have written only 22, 23, 25 SRT have got recommended. I don't know whether their site has recommended them or not, but it is the case that they have got recommended. I myself, interesting fact है कि मेरा चेस्ट नंबर 37 था और मैंने 37 ही SRTs
Anyways, so it can completely depend on your writing speed. मैं आपको सिर्फ ये एक बात कहूँगा कि आप राइटिंग क्वालिटी इंप्रूव करें और प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस से आपकी स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी और आप 40-45 के करीब पहुंच जाओगे. ठीक है. सो और कोई एसआरटी में ध्यान रखने वाली बात तो यही है मेरे दिमाग में कि शॉर्ट लिखो. यस भाई. यस सचिन ने अच्छा बताया कि इसमें क्वांटिटी डज नॉट मैटर बट क्वालिटी डू, राइट. तो हमने क्वालिटी SRTs के रिस्पॉन्सेस देने हैं. क्वालिटी रिस्पॉन्सेस ऑफ SRTs आर व्हिच द साइकोलॉजिस्ट इज लुकिंग फॉर. ही इज नॉट लुकिंग फॉर द बुलशिट आइडियाज एंड एक्शंस इन एग्जैजरेशन से बचना है. इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि दैट शुड बी वेरी मच कवर्ड. दैट नो जस्टिफिकेशन ऑफ एवरी एक्शन इज रिक्वायर्ड while you are giving multiple actions in your one SRT. जैसे I would take one example कि he was going with his sister. He was going with his sister in a dark night on a road, and suddenly 2 armed persons appeared and they asked for the wallet. And on the spot they just threat him for shot, right. They threat him for a shot, otherwise they asked for the wallet. तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि we will I will मतलब he gunned on him and he just nabbed him and called the police and handed over him, है ना. He could have shot you also. So I think हमने ये छोटी छोटी जो मटेरियलिस्टिक चीजें इनसे बचना है. मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ SRT. जो छोटी छोटी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसके लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है. दिस इज वेरी मच नॉट फैक्ट and this has been told by many of the assessors as well as senior psychologists at every corner in the India, right. उसके बाद in the same SRT, if those armed persons are asking to compromise with the integrity of your relationship with your sister, that indirectly you might have understood that what I mean to say, that in case they are asking you and prompting you to compromise your integrity of your relationship with your sister, then you will have to take them over. Otherwise अगर वो वॉलेट मांग रहे हैं तो गिव देम वॉलेट. अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि गिव योर शू, भाई मेरे पास रनिंग के लिए शू नहीं है, तो गिव देम शू. Give them whatever they are asking for in case of materialistic things. But in case they are asking you to give down your morality, to compromise with your ethics, to compromise with the integrity of your relationship with your sister, then you must take them over. You must handle them by hook or by crook, by any mean. Then in case you have to lay your life, that is also acceptable. So I hope that you have understood the core. जो इसकी मरम है ना वो समझने की कोशिश करनी है हमने. बेसिकली वी शुड नॉट बी हैविंग ब्रॉड आइडिया जस्ट अबाउट द SRT. मरम इसकी यही है कि ही इज बेसिकली चेकिंग द फेथ सिस्टम, द बिलीफ सिस्टम एंड द थिंग दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड आवर पर्सनालिटी, राइट. उसके बाद है कि इसमें हमने इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, जो भी एग्जैजरेशन नहीं देनी है, फालतू की इंफॉर्मेशन हमने SRT में नहीं देनी. Priority is what matters is in conflicting social situations and not your चतुराई to handle all things simultaneously. हमारी चतुराई का टेस्ट नहीं है, ये पहली बात तो ये है. SRT में हमारी जो है ना वहाँ पर क्लेवरनेस नहीं चेक करी जा रही. They are just looking for a gentle person who can take a syndicate of 10 to 8 people, 8 to 10 people in the war zone and win the war and come back with less casualties of the soldiers. And they are looking for the best officer material. So in case we are going cleverness over there, we are doing just frivolous facts in front of the assessors that will not going to gain much of the favor of the assessors, rather than showing that moral powers as well as high moral ethics to them in the form of writing. तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमारी जो अगर हमने सोशल एथिक्स के लिए किसी की जान बचाने के लिए अगर हमारी जान भी जा रही है ना, दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेबल. इन द लाइव एग्जांपल आई हैव रिसेंटली सीन देयर इज एन ऑफिसर who was just coming back from leave, and suddenly while traveling through a three-wheeler, he heard that behind that three-wheeler there was an accident in which that individual was likely to die. But the moment in which he has seen that there were so many people to help that person out,
So he didn't take out the bag, take out himself from the auto and help that person because there were so many people over there already. So he was just telling me कि Ashwini यार such kind of situations arises when we live in our society really. तो उस situation में मैंने सोचा कि यार what should I do if there were no people to help out that person who was likely to die because of that accident, then what would have been my responsibility in that case. तो बोला कि मेरी अगर चाहे 5 मिनट में ट्रेन निकलने जा रही थी तो अगर ट्रेन निकल भी जाती तो नो मैटर आई वुड हैव बीन एबल टू जस्टिफाई माय कमांडिंग ऑफिसर कि सर बिकॉज ऑफ दिस reason I was late because there was an accident and that person was to die and I was prompted my thought process to shift that person to the hospital nearest possible and that's why I got late and you can punish me anything you can grant me punish whatever you think. तो उस केस में अगर मुझे पनिशमेंट भी खानी पड़े तो दैट इज एक्सेप्टेबल दैट इज अ थॉट ऑफ अ कमांडो राइट. अगर हमने किसी अपनी सोसाइटी के किसी बंदे की जान जा रही है तो उसकी जान बचाने के लिए अगर हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें जैसे ट्रेन छूट गई फ्लाइट लेट हो गई इंटरव्यू के लिए लेट हो गया क्योंकि एसआरटीज में आता है कि योर मदर इज dying hurt your mother is having operation on the same day that your exam is going to be conducted what will you do. तो बंदा वहां पर मेरे जैसा जो XYZ person will write कि यार he will hand over his mother to somebody else and he'll ask his friend to give that necessary take care to his mother and he'll go for the exam. अरे यार mother important है या exam important है. Mother is going to die and you are looking for your any exam. So this is the test of morality, this is the test of your belief system, this is the test of your faith. And sacrificing of personal aim for common good or morally better thing is fully acceptable. अगर सोसाइटी में मॉरली चीज के लिए अगर हम अपने छोटे छोटे गोल्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना सपोज देयर इज अ नीड ऑफ मेडिकेशन सपोज एट योर नियर प्लेस देयर इज एन ओल्ड एज लेडी who has been suffering from high temperature since the morning and there is nobody at her home to help her out to take her to the medical facility center and you are there and you are also likely to go for the tournament and final match of your tournament, then what will you do. तो मैं बोलूंगा नहीं माता जी मेरा भी टूर्नामेंट है मैं भी जा रहा हूँ तो आप मरते हो तो मरते जाओ. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. So I hope that you have well understood that what is the point of curiousness in this SRT system. That is also a confirmatory test, and all the responses are very much acceptable. Or last but not the least, कि quantity does not matter but quality do. हमने इसमें जैसे सचिन ने बताया कि there was a person who might have been recommended within just a quantity of 25 and above SRTs, maybe 26, 27, 30 or something around that. But there might be some people who might have attempted all the 60 SRTs and they have not been able to make it out just because of the bullshit responses. तो वो चीजों से प्लीज बचना है हमने राइट. And last on matters of principle, it is in the principle which matters and not the materialistic cost benefit analysis. हमने इसमें cost analysis benefits के लिए नहीं भागना है कि किसी के मान लो आपको 500 रुपए का पेन आपने लिया अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए लेकिन आपका फ्रेंड जो आपके साथ बचपन से आ रहा है वो बोला कि नहीं यार तेरी गर्लफ्रेंड तो तेरे साथ अच्छी बनती है यू गिव मी दिस पेन टू मी सो दैट आई कैन इम्प्रेस माय गर्लफ्रेंड. तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए. This is a off the record. I am not going to say that this SRT will definitely be there in your SSB, but this is a thing in which morality matters a lot. तो ऐसी चीजों में ना हमने रिलेशनशिप और अपनी मोरालिटी को हमने वैल्यू देनी है ना कि मटेरियलिस्टिक चीजों को राइट. चलो ओके थैंक यू सचिन गो अहेड प्लीज. Very well covered, bhai. Very well covered. And really it was very insightful. I noted a lot of points I got to learn and know. And the point of morality and principles was really something which I keep in mind for my life also, not just for SRTs. And yeah, we should not compromise our life for materialistic things, but we should not compromise our morals for our life. So yeah, noted. So it was really great. I don't know points to make so strong. Great. So anyone have any doubt regarding SRT? Someone raised their while
speaking. Please ask now if you have any doubts. Yeah, I raised my hand, but sir has very perfectly blended the answers. So thank you. हाँ जी पल्लवी Any हाँ person having any? Yes. Speak. Sir, what is actually, what is the principal thing that is seen in SRT? Could you please say in two other lines? What is the Principal thing. This is the predominant thing that is seen in SRT. Can you please describe it? Okay, so we both are going to describe it. So, predominant, the whole basic concept of psychological testing is to test your values and beliefs. If you tweak or if you have good values and good beliefs, you believe in having good values and having like doing good for all people around you. You hold some love and compassion for the fellow human beings, for fellow life, for the fellow technology, and each and everything with whatever is there around you. You're a positive person. So basically, these are two words: values and beliefs are being checked in one of the psychological tests. If you work on these two, you will do good things and you will perform great in this psychology. This is what I think. Okay. Thank you, sir. Yes. Do you want to add anything, Ashwani? No, Sachin, please continue. Whenever I feel that, I will add. Thank you. Okay. That's the point of it. Any other doubts? No doubts. Any review or feedback for today's session? So I have a feedback. Yes. So when we practice, when we are practicing our daily sessions, could you please add WAT and SRT in that, because that would be really helpful for all the students. Like in daily. After this, there's a 8-day free SSB course which is going now. After that, we will start our daily sessions. So in that, Okay. if So I understood what you are trying to say कि हम एक practice session करें जिसमें WATs और SRTs discuss करें. yes sir. So I feel bro, yes you can discuss about SRTs, but अगर हम वो वाले sessions host करने लगे क्योंकि predominantly ये जो written format में chat section में कभी भी हो सकते हैं. टेलीग्राम पे स्पेसिफिकली सेक्शन है WAT के SRT के बने हुए, वहां जब SRT को भेजते हैं तो वहां पर आप टाइप करके डिस्कस कर सकते हो अगर आप दिल्ली को. तो आई थिंक कि these things can be discussed over those sections also. वहां पर हर टास्क के अलग अलग टॉपिक हैं तो आप टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हो. जिन चीजों के लिए 15 लोगों का आना जरूरी है, आपस में बातचीत करके बोलना जरूरी है, वो वाले सेशन गूगल मीट पे होते हैं. मैं पीपीटी जी ये है. Any other review feedback? Okay, shall we conclude today's session? Great. It was really fun exploring the concept and depth of WAT and SRT. I express my gratitude to Yashwani Bhai who have contributed well to this session, and as well as to all of you who have attended it attentively, and also I express my regard and gratitude to the parents who support me in these sessions